Yes, sir. Thank you so much for your patient waiting here. So I'm going to start. So already you have got the information that we are going to start with something today, which is about the counting. And it is a very preliminary part. We are going to explain it to you because as the Sadri sir has already told you that we'll be having many other resource persons who will definitely discuss some problems of the higher ends. So we are just going to prepare you in these days, around for 10 days, about the basics. So yesterday sir has already taken a very nice session where he has discussed about the inclusion and exclusion principles. So today we are going to discuss something which is related to counting. So as a part of mathematics Olympiad or such competitive exams, it plays a very vital role. Actually, we are keeping this under the combinatorics. So in combinatorics, there are various parts. So you'll find pigeonhole principle also. That we'll discuss afterwards. But today I'm going to just discuss the very preliminary things and the tools which will be useful for you in understanding permutation combinations. So without much delay, I'm going to start with. So at the very beginning, without making any kind of different questions or different observations, just I want to introduce you all to a tool, a very small tool, but very powerful, right? That is the factorial notation. Sorry, just a minute. My handwriting is not very good, so please try to adjust. Factorial notation. I think my board is visible. Yes, Yes, sir, sir. your board is visible. Yes, sir. Thank you. So factorial notation. So what is factorial notation, right? So this is defined for any positive integer. Let us start with positive integer. There will be a small exception afterwards. Positive integer n. If you start multiplying all the numbers, all the natural numbers, right from 1 up to this number, that is 1 into 2 into, I am using the dot for the multiplication, till n you go, then whatever you get, you will be getting a bigger number. That product is known as the factorial n or n factorial. We have this symbol to be used for factorial n, or there is one more symbol which nowadays we rarely use, this symbol. So what I personally feel that I think there is a typing problem for this, so we do not use it. Or is there any other reason? I don't know, but we are very much comfortable with this particular symbol. So quickly, if I ask you, if I multiply this 1, 2, 3, 4, 5, remember it, there should not be any gap. It should be a continuous multiplication. So it should be written as 5 factorial. So what happens after a few times, to make it more comfortable, we do not write it like this actually. I started with a different order. My order can be this. I start with the biggest number whose factorial I am going to find. And then I'm going to reduce it by one every time in every step till I reach the moment where I get 1. And then whatever I get is known as a factorial. So this is considered as a definition. This is considered as a definition. So in this particular way, if you proceed, simply I ask you what is factorial 1, then this itself will be the value. Then if I talk about factorial 2, then it will be 2 into 1, that will give you 2. This way you can proceed for finding the numbers. So it is of course very useless if I go on finding all this. So you take time and try to find at least up to 10 factorial. And if you can remember the values up to 8 factorial, it will be a good help for you to work out the calculations in a faster way, if you can. But it is not a very mandatory thing that you have to learn only. So this is the thing. Okay. Now how it will help us? We'll go for that. We are having very interesting problems for that. But before that, we need to learn something, or we need to understand something which will be generated from this definition. So let us do that.
If I talk about n factorial, I have told you that you should start with n and then you go up to 1. What if one person will start from this portion? Suppose that n you want to keep outside and your biggest or the highest number here, natural number, is n minus 1. And then you are starting from this point and you are going up to 1 and you are multiplying every terms here. So can someone tell me what I can expect to get here? Sir, n minus 1 factorial. N minus 1 factorial. Great. N minus 1 factorial. Great. Good. So actually, this will work as a rule for us. What happens? If you pick up or take out the biggest number, then factorial goes to the next number. So we just try to remember it because it will be a good help for us whenever we'll be going for a solution of problems. So for instance, if I write 8, then next moment I can write this as 8. This is times, of course. This is into 8 into 7 factorial. And then supposing that I want to take 7 also outside, then it will be 6 factorial. So this is a very good step we have to follow whenever we are going for solving or simplifying some expressions. Quickly, I'll come for those examples. But there is a very important queries coming onto our mind. Of course, at the beginning, I told you that this is defined for natural number, positive integers. But there is an exception. We define it for 0 factorial, 0 also. How will this be counted? So actually, this will be counted from the definition only. From the definition, we have got this. Now, if I ask you to put n equal to 1 in that particular property or the deduction, what do you expect to get? You will be getting 1 factorial, and then this is 1, and then this is 0 factorial. So from here, you can identify that 0 factorial is equal to 1. So this way, we just generate it. So henceforth, we have to remember that somewhere if I get 0 factorial, then we should consider it as 1. So two things we have just come to know. One is the n factorial or factorial n, and then 0 factorial is equal to 1. And the other factorials you can easily find. There is no problem at all. So after that, there is very important note to remember, that is remark. From the definition only, it is clear. If n is other than natural number, or rather I'll write whole number, other than whole number, then factorial n is not defined. So this is to be remembered. So this will be doing. And one more thing, we have a convention, small convention. Normally, whenever we use permutation combinations, by the word number, we mean actually the positive integers. Default. So that also you have to keep in mind. So this is about the introduction of factorial n. Now, how does it help us? Just quickly, we'll go for some of the small queries or questions, because students might get confused with that. क्या confusion आ सकता है? If I ask you, write 3 factorial plus 4 factorial, then of course you have to do this individually. You have to find it 6, and this will be 24, and then that will together give you 30. It is never equal to 3 plus 4 whole factorial. So be very, very alert about that. It will be actually 7 factorial, and which is much more larger than 3 factorial plus 4 factorial. And this is not only true for plus, this is true for subtraction, multiplication, and division as well. So be very, very clear about this particular part. So quickly I'll write this. I'll not work it out. So you can do that. If someone finds like this, it is never equal to 3 into 4 factorial. In that same case, if someone say, okay, you find 3 factorial minus 4 factorial, then it is never equal to 3 minus 4 factorial. So this always you have to remember. This is a very small part to be remembered. Now, where we'll be getting the help in working out? Thoda sa chota sa example lete, then we'll be getting how powerful this factorial will be.
एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. Supposing that somebody asks you that you divide 100 factorial by 99 factorial. Now here you need not really bother. You need not really get scared कि भाई 101 factorial कैसे निकालेंगे, क्योंकि 101, 100, 99 up to 1 मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, then फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा. इवन यू माइट थिंक कि चलो भाई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लेकिन नंबर्स को लिखेंगे, फिर एक एक करके देख के कैंसिल करेंगे. बट एक्चुअली यू नीड नॉट डू दैट. व्हाई? बिकॉज वी हैव वन प्रॉपर्टी. उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करेंगे, द बिगर नंबर व्हिच इज हैविंग द फैक्टोरियल्स विल स्प्लिट दिस विल ब्रेक. वो प्रॉपर्टी यूज करके कैसे, आई विल टेक आउट 100, बाहर निकाल लेंगे इसको 101 को, तो अंदर क्या रहेगा, 100 फैक्टोरियल रहेगा. चलो 100 फैक्टोरियल से मेरा काम नहीं बना, तो 100 फैक्टोरियल को भी बाहर कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर, 99 फैक्टोरियल. और मैं देख रहा हूं कि नीचे वाले नंबर को मैं आराम से कट कर सकता हूं. नाउ दिस कैंसिलेशन इज वैलिड एंड देन योर आंसर इज 10100. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. इज इट क्लियर टू यू? और कोई डाउट है? Yes, sir, it's clear. Okay. So I think there is no one asking any question. Okay. चलो. तो now ये रहा हमारा छोटा सा एक प्रिलिमिनरी सिंप्लीफिकेशंस. अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं, कैसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है. जस्ट इट इज वार्म अप क्वेश्चंस. डोंट फील के ये एक्चुअल क्वेश्चंस है. ये हमारा जुगाड़ है, राइट, अस्त्र शस्त्र, जिससे हम लोग इससे डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल plus k by 11 factorial, right? Find k. Find k. This is a question we got. Fine. Acha, at the very beginning, I tell you that this question I have solved in my class also. The way I solved, one of my students, he is here only in it. He did not solve it in that way. So I'll show you both the ways. Whatever you find good, you take that. My main aim is not to quickly go for the solution right at this moment. यहाँ से जो conclusion मिलेगा वो चाहिए. So anyway, कैसे solve करेंगे, ध्यान से देखोगे. अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब factorials involve होगा, if there are numbers which are close to each other, we try to break the number which is bigger, not the smaller one. तो in that way, 9 factorial I'll preserve, इसको break नहीं करेंगे. 10 factorial को break करेंगे and then this I'll write as 10 into 9 factorial, and then this I'll write as 11 factorial, 10 factorial, and then this will be 9 factorial. Now everyone can understand that 9 factorial is common to every term. So मेरा एक छोटा सा मेमोरी टाइप का यूज करते हैं, जो कॉमन है वो हो या ना हो कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, इस टाइप का एक मेमोरी एड बनाया. तो उस हिसाब से ऊपर वाले जो इक्वेशन है इसमें फैक्टोरियल 9 सभी में है, नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में इसको ड्रॉप कर दो. मीनिंग इज दैट वी कैंसिल इट. सो क्या आंसर होगा, 1/1 मतलब 1, ये हो गया 1/10 एंड देन k बाई कितना होगा, 11 into 10. नीड नॉट मल्टीप्लाई दिस. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम. Then we'll be getting this as 11 and this will be k divided by 11 times 10. So you can easily verify that this 10 can be cancelled out and your ultimate answer will be k equals 11 square, that is equal to 121. So you got ultimately the value of k as 121. Did you understand these things? Have you all understood? Sir, can you explain once again? Which particular part? It's the first part. This one. Yes, sir. Okay. So here you see, you have three numbers, 9 factorial, 10 factorial, and 11 factorial. Which one is the biggest out of this? 11 factorial is the biggest and the smallest is 9 factorial.
सो हम क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल को फर्दर वी विल नॉट ब्रेक दिस, वी विल नॉट ब्रेक इट फर्दर, वी विल कीप इट लाइक दिस. Then 10 factorial will be broken as this with the help of this particular property. एक देखो डेफिनेशन से हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी निकाला था, ये वाला. जब हम लोग सबसे बड़ा नंबर को बाहर कर देंगे, फैक्टोरियल नेक्स्ट में चला जाता है. तो ठीक उसी तरह से 10 फैक्टोरियल से क्या करेंगे हम लोग, यहां से 10 को निकाल देंगे, तो मेरे पास क्या रहेगा, 10 into 9 फैक्टोरियल रहेगा. तो दैट वे यू हैव ब्रोकन इट. और उसके बाद शायद तुम्हें कॉमन लेने वाला चीज पता नहीं चला, वी विल टेक 1/9 फैक्टोरियल कॉमन. तो क्या होगा, इसमें 1/10 आ जाएगा, और इसमें क्या होगा, 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल. तो आप देखो, इसको अगर इस साइड में ले जाओगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, एंड देन विल बी कमिंग अप टू दिस इक्वेशन. क्या क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है. अभी ये तो मैंने किया था ऐसे, बट व्हाट इज द अल्टरनेटिव वे दैट माय स्टूडेंट डिड? तो वो कैसे किया है, देखो. इफ यू लाइक दिस, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ऐसे नहीं करके उसने क्या किया है, ये जो 11 फैक्टोरियल है इसको इधर लेके आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. तो क्या होगा तब, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, and then 11 factorial divided by 10 factorial, and then this will be k. Straight away you will be getting the value of k. और इसमें इसको तोड़ दो, तोड़ देने से क्या रहेगा, 11 into 10 ये रह गया, and then what will be left out here, यहाँ पे बस 11 रहेगा. then you will be getting this as, ये 110 हो गया, then 121. so this way he did it. so you can also opt for this. so ये एक क्वेश्चन है, लेकिन सरप्राइजिंग थिंग इज दैट इसमें पैटर्न को ऑब्जर्व करो. अगर आपको ऐसा पैटर्न मिलता है जिसमें ये तीनों नंबर कंसेक्यूटिव हो और यहाँ पे अननोन क्वांटिटी हो, तो इस वाले अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हमेशा ये नीचे जो नंबर है 11 उसका स्क्वायर का बराबर होता है. सो कभी अगर मल्टीपल चॉइस का तुम्हारा बात बना, या फिर तुम्हें कहीं एज ए पार्ट दिस क्वेश्चन मिल गया, तो एक सेकंड में तुम इसको कर सकते हो. क्योंकि पैटर्न क्या है अभी, 1/n फैक्टोरियल, 1/n plus 1 फैक्टोरियल इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n plus 2 फैक्टोरियल. तो फिर इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू होगा n plus 2 होल स्क्वायर. क्विकली यू विल बी गेटिंग द आंसर. इसको एक, मैं तो आइडेंटिटी बोलूंगा नहीं, बट यू कैन रिमेंबर इट. सो दिस विल हेल्प यू इमेंसली. क्या मैं क्लियर हूं अभी तक? Yes, sir. I think I am not moving. Yes, sir. So अभी देखो इसमें क्या वेरिएशन हम लोग ला सकते हैं, ये तुमको खुद को सोचना है. मैं बस एक वेरिएशन दिखा देता हूँ. टुमारो आई कैन गिव यू ए क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड. चलो भाई, एक आ गया यहाँ पे 11 फैक्टोरियल, एंड देन यहाँ पे मैंने k स्क्वायर डाल दिया और 12 फैक्टोरियल, एंड देन आई एम आस्किंग यू व्हाट इज k. ठीक है, मैं ये वेरिएशन ला सकता हूँ. ये वेरिएशन अगर लाऊंगा, इसका मतलब k स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 12 स्क्वायर. अच्छा, इसके बाद कौन बोलेगा क्या आंसर हमें होना चाहिए? 144. Sir, 12 12 और प्लस माइनस 12, प्लस और माइनस. plus 12 because minus 12 is not considered. Why it is not considered? What is the reason that it is not considered? Sir, because 12 Addition of 2 factorial cannot be negative. considered. Just another person told, I think. Please tell again. I could not hear you. Sir, because 12 was under 12 factorial, and if you take out 12, it can be minus. It means it can be negative. It cannot be negative. But here, you see. Sir, addition of 2 factorial cannot be negative. Okay, fine. But here there is square. This square will make this particular thing a positive number, whether you are giving input as minus 12 or plus 12, because ultimately this will come out as an equation. An equation, if it permits, we can take the value as negative also. यहाँ पे k मैंने कुछ नहीं बोला है कि k को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या नेगेटिव. सो इट कैन बी बोथ पॉजिटिव 12 और नेगेटिव 12. यहाँ पे अगर मैं बोल देता कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k,
for which this equation is valid, then of course you would have told this as 12. So be very attentive about this particular part. ठीक है? Okay. So now इसके बाद तुम अपना वेरिएशन देख लो, इसमें क्या क्या वेरिएशन हम लोग ला सकते हैं. 2k दे सकते हैं, we can give you 2k, we can give you 4k square. So somehow we will be modifying this so that Excuse me, sir. accordingly. Yes, tell. Sir, it is said that the k square value is 12 square. So if it is a negative number, then it will ultimately come in positive. So is there any require of getting a negative number? Yes, we need record. We need it because ultimately this is given as an equation, right? So in an equation, if there is some unknown, it has got some values, roots. Until and unless you have a finest logic that I can discard this value, I do not have any reason to say that ये नहीं होगा. तब तक हमें वो सारे values accept करते रहना पड़ेगा जो इसको satisfy करेगा, right? तो यहाँ पे मैंने बस ये बोला आपको कि you find k, ऐसा k निकालो जो इसको satisfy करेगा. तो मैंने इसमें restriction नहीं लगाया कि इसमें positive integer होना चाहिए. हाँ, अभी तुम ये बोल सकते हो कि अभी थोड़ी देर पहले बोला नंबर मतलब हमारे लिए यहाँ पे positive integers है. वो only for working out these things, but not for solving an equations. Am I clear? Is it Yes, by sir. chance convincing or you're not convinced? So yeah, it's convinced. Okay. So this way we can go for it. But right now, just I want to point out one more thing, because students commit mistake over here. Remember always, it is a mistake. Actually, we also teach like this. This is mistaken part of teacher also. अगर कल को कोई तुम्हें पूछता है, what is square root of 144? What will be your answer? And कल को अगर कोई पूछता है कि x square equal to 144, तो what is the value of x? What will be your answer? पहला आपका आंसर क्या होगा? 12. 12. Only 12? -12. Plus or minus 12. ठीक है, एक कोई बोला plus 12 और कोई बोला है plus or minus 12. सेकेंड का Sir, Plus actually, minus 12. plus or minus 12. Sir, actually, sir, I have read somewhere like if we put the root over in the square of any number like x square, if we put if we put root over, then it becomes not simply x, it becomes mod of x. So only 12 can be considered, I guess, in that Yeah. case. That is correct. Actually, square root is never negative. Square root is always considered as a positive one. So कहीं अगर तुम्हें ये मिल गया x square, so इसका वैल्यू होता है mod of x, absolute value of x. That means if you get somewhere 144, your answer is not 1 plus or minus 12, but it should be positive 12. You always remember. But after that, you might ask me the question, sir, इसमें भी तो मैं लिखूंगा x equal to 144, तो इसमें तो 12 भी आना चाहिए, माइनस कैसे आएगा, right? But actually, this is not the way. This is the shortcut way. We have skipped many steps in doing this. The background is different. The background is what you know. We have taken 144 to the left side, and then we factorize this. और जब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तब हम लोग एक छोटा सा रूल यूज करेंगे जो हम सभी जानते हैं. कोई भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है, तो उनमें से एक रियल नंबर को तो कम से कम जीरो होना ही पड़ेगा. बट यहाँ पे here I don't know which one is zero, so I have opened the option for both. So if this is 0, I get x equal to minus 12, sorry 12, and if this is 0, I get x equal to minus 12. In that way, for the equation you'll be getting two roots, whereas if you find the square root, you'll be always treating positive as the value, right? So be very alert about that part. I can remember yesterday Das Chaudhary sir has also tried to take you to the complex numbers. Of course, we have to discuss it extensively. तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर का ऑपरेशंस में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आते हैं. उसमें से एक डिफरेंस मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, बट यू ट्राई टू थिंक आई एम जस्ट कीपिंग वन ऑप्शन ओपन फॉर यू. एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी मिला था, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्क्वायर रूट के लिए लाते हैं. इफ आई हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, ये वैलिड होने के लिए
टू गेट इट वैलिड, क्या ऐसा कंडीशन होना चाहिए ए और बी के ऊपर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये होमवर्क है तुम लोगों का, यू फाइंड इट, बिकॉज every now and then once we find these particular things we directly and blindly apply it. क्या ऐसा restrictions यहाँ पे आएगा जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो ये तुम्हारा काम, you have to see this. Okay, so any questions ऊपर? मैं ज्यादा स्पीड तो नहीं बोल रहा हूँ या फिर ज्यादा स्लो तो नहीं बोल रहा हूँ? No, sir. Okay, No, so sir. here factorial, yes. ओके, ये रहा हमारा फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शन। अभी देखते हैं फैक्टोरियल क्या क्या कर सकता है हमारे लिए। लेट अस जस्ट ट्राई टू सी व्हाट फैक्टोरियल कैन डू फॉर अस। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखने से तुम्हें लगेगा कि भाई ये कैसे करेंगे इतना बड़ा, तो हम लोग देखेंगे अभी। देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 100 factorial is divided by 10. One factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to 100 factorial, इसको डिवाइड करो निकालने के बाद और बोलो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ये तुम पूरा 100 इसको निकालो, साम निकालो, उसके बाद 10 से डिवाइड करो। साम निकल जाएगा तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में 0 है तो 0 कट जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बट कैन यू प्रैक्टिकली डू इट? वी कैन नॉट डू इट, राइट? इट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम इन फैक्ट। सो हम लोगों के पास एक बुद्धि है, इसमें तुम्हारा ऑब्जर्वेशन काम करेगा बस। दैट्स द पावरफुल पिल दिस फैक्टोरियल इज हैविंग। अब देखो थोड़ा सा काम, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट अप टू 8 फैक्टोरियल। कारण क्या है इसमें पता चलेगा। देखो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 2 है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है करके देखो 120 है, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा 720। अब मुझे कोई बोल सकता है क्या, अगर इसके बाद में कोई भी फैक्टोरियल में निकालता जाऊं अप टू 100 फैक्टोरियल, कैन देयर बी अ सिंगल लाइक यूनिफॉर्मिटी इन द रिजल्ट्स? कोई बोल सकता है क्या यूनिफॉर्मिटी मुझे मिलेगा? Sir, Ending with divisible by 0. 10. It is Ending with 0. It is ending with 0. Great. So इसका मतलब है मुझे अभी कुछ नहीं सोचना है, इसके जो पीछे नंबर आएगा ना ये सारे नंबर 0 से ही खत्म होगा। तो इसका मतलब है यहां से जो भी साम मुझे मिल रहा है 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस कुछ भी, ये तो डेफिनेटली 10 से डिवाइड होना ही है। तो मुझे बस इसको पट्टा ही नहीं देना है, ये ओमिट कर दो भाई, ये तो 10 से डिवाइड होगा ही। आप तुम बस देखो कि ये वाला का साम कितना बनेगा। अब इसका साम जितना बनेगा उसको 10 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर मिलेगा दैट इज द रिमाइंडर। डिड यू अंडरस्टैंड द फैक्ट? क्या ये समझ में आया? यहां से सम कितना होगा, व्हाट विल बी सम 33। अब 33 को 10 से डिवाइड करने से कितना आएगा रिमाइंडर? 3. So 3 is the remainder when you divide this big sum by 10. अगर कल को किसी ने पूछ लिया भाई 100 अगर डिवाइड करेंगे तो क्या करोगे, थोड़ा टीडियस होगा, बट तुम्हें वहां तक निकालना है जिसमें तुम्हें 2 0 निकल जाए। 2 0 निकलने के बाद पहले वाले जितना सम है उसको 100 से डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट्स, राइट? इस क्वेश्चन को हम लोग मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अगर डालेंगे, वैसे 19 में इसको नहीं डालते हैं, इसको नीचे डालते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, माय क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, what is the last digit? What is the last digit of the sum? What is the last digit of the sum? बस इसको ऐसे करके हम लोग छोड़ देंगे। And then I'll ask you what is the last digit of this? तो last digit कैसे मिलेगा ये तुमको जानना चाहिए। Very shortly we'll go to the number theory. Congruent modulo सीखोगे, कोई भी नंबर का Mod 10. yes congruent modulo 10,
मतलब 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज द लास्ट डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछेगा 100 से डिवाइड करने से जो बचेगा दैट इज लास्ट 2 डिजिट्स, सो दैट वे विल प्रोसीड। सो ये एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम एज ए स्टार्टर, राइट? क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Sir, actually, I have a small question. यस। Sir, instead of if it is divided by 10, we put the value of like divided by 7 or 6, like then in that case, sir, what can we do? व्हाट कैन यू डू? कैन यू थिंक? ये भी आ सकता है। अगर मैं कल 7 से डिवीजन बोल देता हूँ, एक्चुअली यू शुड हैव बीन विजुअलाइजिंग दिस। देखो 7 से डिवीजन कब होगा? जब उसमें एक 7 फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल से देखो, राइट? 7 फैक्टोरियल ऑनवर्ड सारे नंबर 7 से डिवाइडेड हो गए। Yes, sir. Yes, 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 sir. Just got it. Yes. इफेक्टिवली रिमाइंडर कहाँ से आएगा? जो प्रीवियस पार्ट है। इज इट क्लियर? Yes, sir, it's clear. सो ये एक प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए। ठीक है, चलते हैं अभी दूसरा एक प्रॉब्लम है। जस्ट अ मिनट, मेरा पेज को थोड़ा सा इनएक्टिव होके रखा है। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक छोटा सा और देखने में बहुत सुंदर प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल के देते हैं, ठीक है? फाइंड 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial 3 into 3 factorial, ऐसे करके सपोज मैंने 100 into 100 factorial का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है? ये वैल्यू हमको निकाल के देना है। कैसे निकाले? सबसे बड़ा बात है इसमें भी कहानी वही हुआ, बिकॉज यू कैन फाइंड 1 into 1 factorial, 2 into 2 factorial, लेकिन 100 into 100 factorial निकालना तो 12 बच जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे? देखो इसमें भी हमारा प्रॉपर्टीज बहुत साथ देगा, बस हमको सोचना है थोड़ा सा कैसे करेंगे, देख लो। जस्ट वी विल ट्राई टू थिंक अबाउट द जनरल टर्म। ये सारे में जनरल टर्म अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं मालूम है? r into r factorial. यस। तो अब क्या करेंगे, इसके साथ हम थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं। हम लोग इस r को क्या लिखेंगे? r plus 1 minus 1 into r factorial लिख देते हैं, और उसके बाद बहुत प्यार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो क्या होगा? r plus 1 into r factorial, और ये r factorial हो गया, और सॉरी ये इंप्लाइज साइन नहीं होगा, मैंने गलत दिया। इट इज इक्वल। सो यहां पे क्या होगा फिर? ये बन जाएगा r plus 1 factorial minus r factorial। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ये Sir, बुद्धि। would you excuse me, sir? यस यस, Sir, will you explain it again? हाँ जरूर। यहाँ पे एक बुद्धि किया हम लोगों ने, राइट? हम लोगों के पास आइडिया नहीं है कि किसको प्रोसेस कैसे करेंगे, तो हमने क्या बुद्धि किया? देखो ये जो साथी r है इसको हमने बना दिया r plus 1, और बैलेंस करने के लिए फिर -1 भी करना पड़ा, क्योंकि इसको r ही रखना है। मैं तो इक्वल लिखा हूँ, दिस शुड बी इक्वल। तो उसके बाद क्या किया? ये पूरे ग्रुप को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। कौन सा प्रॉपर्टी भैया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करने के बाद ये मिल गया मुझे। अब ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलता है? कोई भी अगर फैक्टोरियल के सामने इस वाले नंबर से एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो फैक्टोरियल का चार्ज उसके ऊपर चल जाता है, ये इधर बढ़ता है, ये इधर बन गया, है ना? तो r से r plus 1 एक बड़ा नंबर, तो लीडर कौन बनेगा? r plus 1। क्या ये समझ में आया अभी? हाँ सर। ओके, सो अभी हम इस बुद्धि को लगाएंगे कहाँ पे? देखो पूरे सीक्वेंस। Sir, you have written that r plus 1 minus 1. So in place of that, if we write r plus any other number, so will it be proceeding? You try. I'll not tell you the answer. Right? I'll not tell you right at this moment. तो तुम करके देखो, उससे 2 ही ऐड करके देखो, will it work? Just see, check करना एक बार, because this question is coming into your mind, which there must be some workout about that. मैं कर देने से आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? Good thing. Always ask questions, then that is very good thing. तो यही करके घर में देखना क्या इसको उस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं होने से मुझे बोलना। अच्छा,
ये हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा इसमें, ये देखो इसका क्या कहानी था, आर फैक्टोरियल होने से क्या लिखना चाहिए, एक बड़ा फैक्टोरियल माइनस ओरिजिनल फैक्टोरियल। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया? ये वाले से क्या लिखूंगा मैं, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। ये वाले से क्या लिखूंगा मैं, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे हम जाते रहेंगे लास्ट तक, राइट। और इसको क्या करेंगे, 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया? मैंने ऊपर वाला इस रूल को बना दिया एक्चुअली। I have just converted this as a rule and expressed this kind of expression in terms of difference of 2 factorials. 1 मिनट का टाइम लो और देखो समझ में आया या नहीं आया। Sir. Yes. So does it have a certain name of rule which are given? There is some disturbances in your sound. Okay, sir. Can you repeat? Sir, am I audible now? Yes. Sir, the above rule which you have given, does it have any certain name? Does it happen in? Sir, does it have any certain name of its principle or any definition or its identity? We do not have any name for this rule. But we have a name for this kind of sum. ऐसा sum के लिए name है Telescopic series. Yes, exactly. It is telescopic series or we can say telescopic sum. इसमें क्या होता है ना, एक पैटर्न में हम लोग ऐसे माइनस करके एक्सपेंड कर सकते हैं, सो दैट पूरे सम को चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वी कैन फाइंड इट, राइट। तो अभी देखो तुम्हारा पूरा हैसल खत्म हो गया क्योंकि तुम Maybe. Yes sir. Actually, she wanted to know why don't you use the term recurrence relation? Or recurrence, अच्छा. Yes, that is also a good word. Yes, for this, yes, recurrence, yes. Recurrence relation, yes. Right. Thank you, sir. We call it recurrence relation. Excuse me. Yes. Excuse me, sir. Yes. Sir, would you repeat once more? My internet connection was unstable that time. Which particular part? This one. Yes, sir. No, just now, Birabhata Das Chaudhary sir has pointed out. So whenever you will write it like this, where you will change the variable by those natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So that kind of things we call it as recurrence relation. एक के बाद दूसरा वाला previous के ऊपर depend करता है. So ऐसा होने से recurrence relation इसको बोलते हैं. उसके बाद There are so many recurrence relation. Actually, recurrence is the term we are bringing here. Yes. It is not named as recurrence relation, but there are so many recurrence relation in all branches of. Yes. Okay. So, and then Okay, thank you, sir. Using this recurrence relation, whenever you are finding this sum, we call it telescopic sum or telescopic series. Okay. So now here you can get those terms which are positive and negative but equal in magnitude cancelled. So that is 2 factorial, then 3 factorial, and this 4 factorial will cut with the second term of the next term here. That means it will be cancelled here. So this nature you observe, and then you go up to the end, and then you try to see out of these two terms which will be left out. So can you tell me which will be left out? -1. No. Out of this last term, because all term will not get cancelled here. कौन सा term रहेगा यहाँ से? 101 factorial. 101 will be left out because 101. the pairs. इस पेयर का क्या नेचर है? सेकेंड वाला टर्म कट जाता है इससे पहले वाले टर्म के साथ, तो दिस विल बी कैंसल्ड एंड यू विल बी लेफ्ट आउट विथ -1 factorial and then 101 factorial. So overall your answer will be 101 factorial -1. So now of course it is not practically possible या फिर practically not good to think about finding the solution or finding the expansion of 101 because it is taking a lot of time.
कैलकुलेटर में तो होगा नहीं, एरर आएगा, but you can try sitting, but it will be useless. So that way you can find the sum. So naturally this can be generalized. If we go up to this, right, अगर डॉट डॉट करके मैं 100 फैक्टोरियल जो 100 में नहीं जाता हूं, तो मेरा क्या आंसर होगा इसका? 100 + 1 फैक्टोरियल -1. ये हो गया तुम्हारा आंसर. Am I clear to you so far? Yes, sir. ओके. बोर तो नहीं लग रहा है किसी को? बोर लग रहा है तो बोल दो. No, sir. Now next we'll be having a good problem again. एक छोटा सा कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे इसका एप्लीकेशंस कहाँ होगा. Yesterday sir has pointed out one question, greatest integer function. तो इसके साथ इसका एक रिलेशन आएगा. So let us try to find out that. If I ask you expand this 2n factorial, n is a natural number. इससे मैं रिलेशन क्या आएगा नहीं बोल रहा हूं, पहले करके देखते हैं क्या निकलेगा यहां से. Okay, 2n factorial. If I expand this, I'll be getting this as 2n - 1, 2n - 2, ऐसे करके 4, 3, 2, 1 यहां तक चले जाएंगे. अच्छा, every one of us now know that factorial n means it is the multiplication of all the natural numbers starting from 1 up to n, सारे नेचुरल नंबर्स. तो इसमें क्योंकि मैंने कंटिन्यूअसली नेचुरल नंबर काउंट किया, दो टाइप का नेचुरल नंबर आएगा, या तो इवन या फिर ऑड, दो ही टाइप का. सो अब मुझे क्या करना है, यहां से इवन एंड ऑड को सेपरेट कर देना. तो ये रहा इवन, 2n will be even, necessarily even. 2n - 2 is necessarily even. ये 4, ये 2. सो यहां अगर हम लोग इनको एक ग्रुप बनाते हैं, इट इज, बहुत लोग इसको बोल देते हैं कि कॉमन ले लिया. बहुत लोग मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स. ये कॉमन नहीं है, सिंपली वी हैव एसोसिएटेड. तो वी हैव केप्ट द दिस इवन इंटीजर्स दिस साइड, एंड इसी सीक्वेंस का ऑड इंटीजर्स को हम लोग यहां पे रख लेंगे. We'll keep it here. चलो रख देते. इसमें से तो कुछ कॉमन आएगा, वैसे कुछ 3 हो सकता है कहीं आ जाए, नहीं भी आ सकता है. कॉमन नहीं, सॉरी, फैक्टर्स, उससे हमें लेना देना नहीं है. We will try to take 2 from here because each of these numbers are even, we are sure. अच्छा, कोई बोल सकता है क्या यहाँ पे कितना नंबर्स का प्रोडक्ट है? How many numbers are there? is जो twice n into twice n - 2, twice n - 4, यहाँ पे कितना नंबर्स का प्रोडक्ट है? ये तो twice n नंबर्स होगा, twice n नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसमें उतना नंबर का प्रोडक्ट हमने किया है, तो यहाँ पे कितना होगा? Sir, half of 2n numbers of natural numbers. Yes. So it will be n times या n numbers. Yes, sir. n numbers मतलब n 2s will be there. अगर 2 नंबर होता तो 2 2 आएगा, 3 होगा तो 3 2 आएगा, 2s as a factor. So हर में से एक एक 2 आएगा. यहाँ से भी एक 2 लेंगे, 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 और यहाँ से भी एक 2 लेंगे. तो क्योंकि n numbers है, I'll be getting n number of 2s multiplied to each other, so that will give you 2 to the power n. तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? n, n - 1, n - 2, n factorial. yes, very good. तो यहाँ पे you will be getting this. Very good. So actually we will finish here this sum. This will be written as this. ऐसे करके हम लोग इसको लिख के छोड़ सकते हैं. ठीक है, दिस इज. अब ये कहाँ पे यूज होगा हमें पता चल जाएगा. ये एक एक्सप्रेशन हम लोग इसमें छोड़ सकते हैं. ठीक है, इसी का थोड़ा सा आइडिया लेंगे, इसी का आइडिया थोड़ा सा लेंगे नेक्स्ट वाले जो प्रॉब्लम करने के लिए. वो बहुत सुंदर दिखता है. दैट प्रॉब्लम इज वेरी ब्यूटीफुल. सो यहाँ पे ये स्टेप्स समझ में आया है या नहीं? कोई डिफिकल्ट स्टेप्स तो है नहीं, बस रीअरेंज करने वाला स्टेप्स है. किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? No, sir. Okay. Now you see we have a good looking problem and really beautiful problem as well. Find
मैं टेक्निकली पहले लिख देता हूं, उसके बाद बोलूंगा कि इजी फॉर्म क्या है. फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल. इसका मीनिंग ऐसे लिख देने से तो मैथमेटिकल हो जाता है, बट अगर इसको हम लोग इजी वे में लिखना चाहते हैं, इफ वी वांट टू राइट इट इन इजी वे, आई कैन आस्क यू वेरी क्लियरली कि इफ यू फैक्टराइज 100 factorial, what is the power of 2, that is exponent of 2. या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 फैक्टोरियल 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, जो प्राइम फैक्टर. डिड यू गेट द क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग? Yes, sir. सो यहां पे देखो अभी कैसे करेंगे. हमारा तो यहाँ पे 100 का ही अगर बोले कि यू फाइंड द पावर ऑफ 2, सो हमें 100 को डिवाइड करना पड़ता है ऐसे. वी हैव टू डिवाइड दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोगों ने क्लास 4-5 में ही सीखा है. तो 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 into 5 times 2. So exponent of 2 is 2. 97. हाँ 97. कैसे किया? How did you do? So like first I divide with 100, like every exponents of 2, like 100 by 2, then like the limit of 2 to the power n, like lastly divide 100, then I add up and 97 came. अच्छा, no, you are correct. Your process is correct. But question is that why it works? Why it works? Number one. So Number because 100 factorial can be written in like prime, like 2 to the power n, 3 to the power n, or like prime numbers multiplication to the power, like. Okay. Will it work for every prime numbers? If I ask you कि exponent of 3 निकालो यहाँ पे 100 का 100 factorial में. Yeah, sir. Okay. ठीक. चलो. Let me explain this. अच्छा, all of you are getting this. If you are getting this, then I can leave this as a work for you at home. चलो एक काम करते हैं, मैं छोटा सा कर लेता हूँ, तुम लोगों के लिए बड़ा छोड़ता हूँ. ठीक है? 100 फैक्टोरियल तुम लोग घर में कर लेना, मैं छोटा सा कर लेता हूँ. एक बुरा हो गया तो मैं थोड़ा कमजोर वाला प्रॉब्लम कर लेता हूँ. जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल में 2 का पावर निकालना है. ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे हम लोग, 10 फैक्टोरियल को हम लोग लिख देते हैं. यू कैन राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज अप टू यू. ऐसे करके ये पूरा दिखता है तो इसलिए मैं आसान वाला प्रॉब्लम ले लिया, तुम लोगों को डिफिकल्ट वाला दे दिया. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको पूरा लास्ट तक लिख देंगे. देने के बाद सबसे पहले ये तो हमें कंफर्म पता है कि ऑड नंबर्स कभी भी 2 से डिविजिबल होगा नहीं. तो मैं क्या करूंगा, बुद्धि करके ये जो इवन नंबर्स है इनको बाहर ले लूंगा. और मुझे पता है कितना इवन नंबर है, 5 इवन नंबर है यहाँ पे. तो फिर 2 की पावर 5 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 5. एंड देन यहाँ से ऊपर वाले जो प्रोसेस यूज किया उस हिसाब से यहाँ से 5 आया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया, और लास्ट यहाँ से 1 आया. और यहाँ पे दुनिया भर का ऑड नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स. मैं लिखूंगा नहीं अभी, ऑड नंबर्स प्रोडक्ट ऐसे करके लिख दिया. यहाँ से 2 जिंदगी में कभी नहीं आएगा. ये क्लियर है? ठीक है. अच्छा, फिर क्या करेंगे, ये 2 टू दी पावर 5 को जमा करते हैं. से अगेन सेम ऑपरेशन यू अप्लाई हियर. इसमें भी आएगा 2, राइट? तो इसमें 2 स्क्वायर आएगा. फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, और 5 3 1 जो है पीछे रह जाएगा. 5 into 3 into 1, और ये दुनिया भर का ऑड नंबर्स. फिर अभी तुम देख लो यहाँ से कितना आएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 2 विल बी 2 टू दी पावर 8. तो 2 टू दी पावर 8 इंटू कुछ ऑड नंबर्स होगा यहाँ पे. तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल को जब तुम फैक्टराइज करोगे, 2 will come for 8 number of times. 8 times it will come. So this 8 is the exponent of 2 when you expand or 10 factorial and factorize it, right? So इसमें अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि कल जो सर ने समझाया था तुम लोगों को, he has explained this greatest integer function
तो उसका यूज करके हम लोग इसको और एफिशिएंटली क्विकली निकाल सकते हैं. एंड ऑलरेडी वन ऑफ योर फ्रेंड हैज टोल्ड उसको डिवाइड करना है, बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एक्सप्लेन वेरी कंप्लीटली. सो दैट as a tool quickly I can tell you, but I'll not tell you now. This will be your work. You go and try to find out क्या हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को यूज करके इसको यहां से ज्यादा एफिशिएंटली कर सकेंगे, और कर सकेंगे तो कैसे कर सकेंगे. मैं फॉर्मूला को रेडी करके नहीं देना चाहता हूं आज, बट यू ट्राई टू फाइंड इट. एंड योर होमवर्क इज दिस, योर होमवर्क इज दिस यू हैव टू डू 100 फैक्टोरियल. 100 फैक्टोरियल नहीं, कोई भी फैक्टोरियल का कर सकते हो. Once you do one problem, you can do the other problem as well. Not only for factorial, exponent of 2, but you can look for exponent of 3. You can look for exponent of 5, like this. Till here, anyone wants to ask any question? No, sir. Am I making you bored by any chance? No, sir. है तो बोल लेना, No, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे खराब नहीं लगता है. ओके, नेक्स्ट. अभी थोड़ा सा हम लोग हटके चलते हैं और कुछ देखते हैं. एक छोटा सा डायरेक्टली तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही लाता हूं तुम सबके लिए, तो तुम लोग देख के ये देखो एक बार. आई कैन रिमेम्बर दास चौधरी सर हैज कम टू आवर स्कूल एज ए रिसोर्स पर्सन. तो एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड. सो क्या ये कोई मुझे बोल सकता है ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन डिस्कस किया गया था. सिटी ए इज कनेक्टेड, एक सिटी ए है इसमें, इज कनेक्टेड टू बी बाय हाउ मेनी पार्ट? 8 पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 8 पार्ट है. फिर सी में जाने के लिए 5 है. 1 2 3 4 5. हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर? 35. कितना? 40. 40. Yes, sir. Is 40. अच्छा, कैसे निकाला? It's 40. 40. वेरी गुड. Sir, by multiplication of, like, there is a law like addition and The fundamental multiplication. principle of counting. Yes, sir. Yes, sir. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. एनीवे, पहले भूल जाओ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, भूल जाओ. क्यों बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम उसमें आते हैं. एक्चुअली इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट? हम लोगों ने छोटे उम्र में, एक्चुअली यू डिड नॉट फेस दिस इन आवर टाइम. देयर वाज मैथमेटिक्स ओरल क्लास 5 क्लास 4 में. क्या पूछते थे? 5 अंडे का दाम अगर 10 रुपया है तो बताओ भाई 3 अंडे का दाम कितना होगा. बस. तो हम लोग सभी क्या करते थे? एक में कन्वर्ट कर देते थे और देके उसके बाद मल्टीप्लाई करते थे. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, राइट? कैसा है, कैसे पता चलेगा? देख लो. यहाँ जो 8 पाथ है, देयर आर 8 पाथ. यू डू नॉट टेक 8 पाथ. पहले देखो कि एक पाथ अगर यहां से लेते हो, उसके बाद बी से सी तक जाने के लिए तुम्हारे पास कितना ऑप्शन? 5. आप देखो, एक पार्ट के लिए 5 ऑप्शन. ऐसा 8 पार्ट है ए से बी तक जाने के लिए, तो हर एक के लिए 5. सो 8 into 5 यू हैव 40 ऑप्शंस, राइट? तो ये वहां से आया, एकदम कॉमन सेंस, राइट? और इसलिए बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल कैलकुलेशंस, इट इज नोन एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट? ये है प्रिंसिपल जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है. लेकिन हमारे पास थोड़ा सा और एक उल्टा भी है, उसको भी लाते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है. जस्ट अ मिनट. यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं खुद बना के देता हूँ. सपोज मान लो, मान लेते हैं इसको, राइट? क्योंकि अभी एक्चुअली तो होगा नहीं. मान लो मैं तुम लोगों को समोसा और कुछ खिलाना चाहता हूँ. सपोज तुम लोग आ गए हो मेरे घर में, मैं कुछ खिलाना चाहता हूँ, और मैंने जाके देखा अपना जो अंदर का फ्रीज हो या फिर रखने वाला ये हो किचन में, तो मैंने देखा 5 समोसा है और 4 स्वीट है. अब क्या है ना, मेरे पास 7 बच्चा आ गया, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं स्वीट एंड समोसा दोनों को नहीं दे सकता, ठीक है?
अच्छा, ये 60 बच्चा को मैं छोड़ देता हूँ, 60 नंबर लेने से मेरा प्रॉब्लम अलग हो जाएगा। तो मेरे पास मान लो ऐसे बच्चा आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज मोर देन 5। अब मुझे सबको कुछ ना कुछ देना है, तो मैं, मेरे पास जितना रिसोर्स है, मैं कितना मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कैटर कर सकता हूँ? डिवीजन 5 है या 9 है? सर 9 होगा। 9 होगा, क्योंकि मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। मैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिसोर्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा भाई, एक ले लो, कोई मिठाई ले लो या फिर समोसा ले लो। तो मेरे पास 9 आइटम है, तो मैं 5 बच्चे को समोसा दूंगा, 4 बच्चे को स्वीट्स दूंगा, तो टोटल मेरे पास 9 ऑप्शंस बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। अगर वही हम ऐसे बोलेंगे कि जैसे दास चौधरी साहब ने एक एग्जांपल दिया था पहले कि मेरे पास ये अगर न्यू बोंगाईगांव है NBQ, तो आई हैव टू गो टू गुवाहाटी, राइट। गुवाहाटी जाने का 2 तरीका है, 2 तरीका इन द सेंस 2 वेज है। एक तो जाओगे तुम, अच्छा ये गुवाहाटी ऐसे चलते हैं, ये रंगिया होके गया, रंगिया RNY आई थिंक, एंड देन ये ग्वालपारा होके गया, ग्वालपारा। तो रूट है, रेल रूट। और यहां से सपोज तुम्हें ट्रेन मिलता है 3, और यहां जाने के लिए सपोज 2 ट्रेन मिलता है। अब तुम्हें गुवाहाटी, न्यू बोंगाईगांव से गुवाहाटी जाना है, तो तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है जाने के लिए? 5 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 तरीका है ना, 2 वेज, दे आर डिफरेंट। एक They are not interdependent. दे आर नॉट डिपेंडेंट। और जब डिपेंडेंसी नहीं रहेगा तो तुम्हारा केसेस डिफरेंट होगा, We have to add. देन यू हैव टू ऐड, यस, एडिशन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, राइट। और जब तुम्हारा डिपेंडेंसी बढ़ेगा, कंटिन्यूएशन होगा प्रोसेस, until and unless you complete all the steps, your total task is not over। तब क्या होगा? You will apply the fundamental principle of counting, Multiplication. ये दोनों चीज बहुत टाइम में स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, बस नेचर ऑफ द वर्क देखो। तुम्हारा वर्क अगर इंडिपेंडेंट होता है। 1 minute. यस सर। So those who have attended the last class, what I did say that pairwise disjoint. So if we take the collections of these trains, say T1, T2, T3, and these trains, G1 and G2. So what is mod of, I mean, order of A union B? If this set is T1, T2, T3, this set is G1 and G2. So you remember means inclusion, exclusion. Now these 2 sets are totally disjoint set, right? If we make a set T1, T2, T3, these are the trains via Rangia, and these are the trains via Gwalpara. So if we write it, then the set is B set is equal, G set is within the bracket G1, G2, and say R set is within the bracket R1, R2, R3. So these 2 are totally disjoint sets. So what will be order of A union R union G? It's order of R plus order of G. Okay. So indirectly also that we are using, we can think the entire this principle of multiplication and addition in set theoretical approach also. Am I clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what Sir Yes, sir. has told, I'll just write it here. So Sir told that the parts will be named. Suppose this is T1, this is T2 and T3. These are the ways. And here it is Z1 and Z2. So we construct these number of ways to be one set, say P. So here what are the elements? These are the elements. And then other set is Q, Z1 and Z2. So what is the order of P? Order of P is 3. And order of Q is how much? 2. And then whenever we need to find the totality here, you need to find the order of P union Q. And because these sets do not have anything in common, so directly what will it work? It will be simply P plus order of P plus order of Q, because they are not having anything in common, mutually adjoint. So thank you, sir. So this is the starting of your addition principle. So these 2 are ruling over the whole permutation combinations. Basically, people might think कि बहुत सारे formula है,
ये सारे फॉर्मूला इन्हीं से आते हैं. All the formulas, factorial, सब यहाँ से ही आते हैं. Right? All complicated problems are only done by these methods. Right? So in that way, these two are very, very powerful tools. Right? So for example, instance, जैसे हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं. Right? कहाँ खुश? Yes sir. আপনি আৰু এটা কাম সহজ কৰি দিয়ক মোৰ যাতে আৰু পিছলৈ ক'ব না লাগে এইটো যেটো মাল্টিপ্লিকেশন প্ৰিন্সিপলটোৰ কাৰণে আপুনি কালি ৰেফাৰেন্সত কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টৰ এইকেটা লৈ লওক x y কৰি সেই ফৰমেটত গৈও দেখুৱাই দিয়ক they will find it interesting I think. Yes sir, sure sir. Okay, so here, okay, set theory, there is one more concept, that is a Cartesian product. Cartesian product of two sets. Right? So Cartesian product of two sets. So here also we will use the multiplication principle only. कैसे? Okay. पहले एक example ले लेते हैं छोटा सा. Right? A small example. Let us take. I want to consider two different sets. दो different sets. ठीक है? So यहाँ पे suppose you have some persons, individuals, group of friends, and here also some group of friends are there. Right? So now if I say that a friend of this group must go there and they will meet each of the other group friends. So कितने को मिलना पड़ेगा यहाँ से A को जाके A1 will meet how many friends? 3 friends. क्योंकि B में तो जब मीट करेगा whenever they will meet तो मैं एक सिंबल में लिखूंगा इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि A1 has met B1 ठीक है फिर A1 has met B2 फिर A1 has met B3 like this is symbol. This symbol will remind me that I told A1 to meet B1 bus and they met. So here what will happen? अगर एक कोई लेते हैं एलिमेंट या फिर एक दोस्त को लेते हैं यहाँ पे उनको 3 दोस्तों से मिलना है अगर यहाँ पे सेकेंड वाले दोस्त भी ले लेते हैं तो फिर 3 दोस्तों से फिर मिलेगा 3 friends. So how many friends are here total altogether? 4 persons. Each person meets 3 of them. So total how many such symbols I'll be getting? A के लिए 3 सिंबल मिला फिर A1 के लिए सॉरी A2 के लिए फिर 3 सिंबल मिलेगा ऐसे 3 सिंबल्स. इफ आई कंसीडर A2 A3 के लिए कितना सिंबल्स मिलेगा ऐसा 3 सिंबल्स एंड देन A4 के लिए भी मुझे मिलेगा 3 सिंबल्स. So total how many such symbols will be getting? 12. So instead of doing this so big way we can directly apply the multiplication principle. Sir, what is the help of this Cartesian product of two sets? Like where we applied this? Where do apply? Yes, Cartesian product will not directly represent there, but we whenever we'll be going to some problems of factorizations in combinatorics only. उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे. फंक्शंस में तो है ही. Okay, sir. फंक्शंस देयर इज डिफरेंट वे बट अगर तुम इसी कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो तो इसी कंटेक्स्ट में जब नंबर का फैक्टराइजेशन होगा इन 2 पार्ट्स तो उसमें हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा. Okay, sir. Thank you, sir. That's all, sir. Any more you can imply? Okay, his question can be answered, but okay, when I will be doing something, then I will make his concept. Yes, sir. Yes. Actually, this in combinatorics we can use. We have applications. We can this Cartesian product. We'll do that, but first of all, just remember that what is being done here. There is a set A with some elements and set B with those elements. Now, can you go back to that? I mean that diagram of trains that you have drawn earlier one. Yeah. So here you see T1, T2, T3, G1, G2, G3. So P and Q are disjoint sets. Okay, fine. Now you make the Cartesian product. You write the set. Suppose C is equal to
You write in that format. Yes, sir. Ordered pair format of Lico. Yes. This is P, this is Q. And then P cross Q. Yes. Is equal to, yeah, XY could dile, no problem. X belongs to P and all this. A general format you want. General format I want. X comma Y, where yeah. Now you tell me what is the order of P cross Q. How many elements are there in this set? How many will be there? 6. It will be 6. Right? 6. In general, here it is 3 only. But in general, if I have n number of elements here, n number of pairs. Actually, I'm referring to the earlier one. That means where the AND logic multiplication principle is used. The earlier one. Yeah, 8 and 5. 8 and 5, you see, if in the first set we have 8 elements, X, Y, Z, Y, X1, Y2, X1, X2, X3 up to X8, and the second set, suppose Y1, Y2, Y3, and if we can generalize like that, then what will be the order of that X cross Y? Is it not 8 into 5? That you have correctly answered. If we make a Cartesian product, if we represent, yeah. Here we have 8 elements, so it is X1, X2, X8, and then here we have 5. Y5. So X cross Y. This. It was 8 into 5, total 40. So number of elements in X cross Y. This Cartesian product is giving you the total number of. So here you see, in this example, we are using the logic OR, either this way or this way, right? So you see here mod of P union Q. What is P union Q? Either P or Q, right? Sorry. Yeah. I made a mistake here. Yes. Yeah. Either P or Q. So this principle will not, multiplication principle is not applied here. But anyway, just remember 2 points. Here the logic is basically OR, either or. But here the logic is AND. Remember these things only. X1 and Y1, X1 and Y2, X1 and Y5. But here the logic is T1, T2, T3, 3 ways, or that means 3 plus 2. So in multidimensional concept, you should develop so that you can understand the counting principle in the set theoretical approach, as well as, the general fundamental, logic. But later on, when we'll be using the combinatorial problem, many times we'll be using this set theoretical approach. But using the fundamental laws of, what is that? Inclusion, exclusion principle and fundamental law, multiplication, addition, etc., etc. So, alag kuch nahi hai. Nothing is different. Here, mod of P union Q is mod P plus mod Q. Those two sets are disjoint, right? Here, the logic is P or, this root or that root. So 3 plus 2, not 3 into 2. And in the problem that sir has taken, 8 parts and 5 parts, here the logic is 8 into 5. In this way, you can make the problem complex. Suppose the A, B, C, D, E, F, and with so many conditions. But finally, we have to either multiply or you have to add. So yes. You remember, that's the point. Your logic is AND or may plus and that multiplication. That's Boolean logic basically. 0 and 1 sub logic means we can again when you will be studying higher courses later on in engineering or somewhere, you will be getting Boolean algebra. They are also same logic you'll be finding, you'll be using. Okay, thank you. There is a hands coming out.
life and life or something like that. You want to ask something? Yes, sir. Yes. Sir, is it like this this type of problem means the Cartesian product of two sets that we have taken most basically all the practical problems like this train and all the examples which you have taken. So does it have its implication on the numbers or any problem solving equations? Yes. आएगा जरूर आएगा. You're getting. Today is the fundamental ones. Okay. There will be many. Okay, चलो एक देखते हैं, इसी का एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एकदम छोटा सा, राइट? इसी का ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का. অকমান আজি আৰু মই নকৰো, আপুনি এটা কাম কৰক, এই সাবসেটৰ ধাৰণাটো অকমান দি দিয়ক, নোটেশন বিলাক দি দিয়ক, তাৰপৰা হাউ মেনি নাম্বাৰ অফ সাবসেটস অফ এ সেট, সেই তেতিয়া আপুনি আকৌ প্ৰিন্সিপলটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব. Yes sir. Yes. So okay, I'll give you that, sir. Subset. Just before that, one small problem, just to start with. Suppose you have 5 bulbs at your home in a room, and then I'm asking you, you light the room. So in how many ways you can light the room? कितने तरीके से room को illuminate कर सकते हो? 5 bulbs are there. इसी में वो भी आएगा subsets, that will also come. कितने तरीके से कर सकते हो? So here only you will find the multiplication principle, practical approach. 5 factorial. 5 factorial. ठीक है, चलो I'll not take much time because time is less little today. मैं बोल देता हूँ, बाकी इस टाइप का प्रॉब्लम्स तुमको बाद में मिल जाएगा. Actually you can try, वो जो एक फ्लायर दिया था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, that you can try yourself. एक स्विच का 2 पोजीशंस होता है, राइट? इसमें हम लोगों ने मल्टीपल प्रिंसिपल को बहुत लंबा तक लेके गया, 2 मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, 5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ये जो पहला है, फर्स्ट स्विच का 2 ही पोजीशन होगा, आइदर ऑन और ऑफ. इसमें से तुम कोई भी एक चूज कर सकते हो. इसमें भी 2 ऑप्शन होगा, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ. अब इसका सीक्वेंस को तुम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, that will give you the total number of options. So यहाँ पे तुम्हें कितना ऑप्शंस मिलेगा? Either you will choose on or you will choose off. ये स्विच को ऑन करके रखोगे तो उसका अगेंस्ट में फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा तुम्हें. So now can you visualize that I have to get the answer by multiplying this? If you now want to visualize this in the form of Cartesian product, Cartesian product के हिसाब से अगर देखना चाहोगे तो ये 2 सेट ऐसे नहीं होगा. You will not be getting 2 sets. You will be getting how many sets? 5 sets. Right? It will be Cartesian product of 5 sets. तो ये इसमें कितना होगा? O and F, O and F, and then you can draw the arrows and count how many options you can get. Right? And this is connected by AND. So your principle will be multiplication principle. Right? So the final answer, I leave it to you, how you will do it. Now just quickly, I'll explain you the idea of sets. Sets already Sir has told you. Subsets I'll be explaining you. And how many total possible subsets can be constructed. That we will tell you. Now, just hardly I'll take 10 minutes. Okay. So yesterday already you got the idea of sets. Sets means collection of well-defined objects. Already you got this. Now from here it is subsets. Subsets means in an easy word you try to understand. This is sub collection. Sub collection. You consider them as a sub collection. क्योंकि सब कलेक्शन बोलने से हमको इजी अंडरस्टैंड होगा, विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इजीली. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर इज ए सेट ए वेयर वहां पे मेरे पास एक पेन है, एक पेंसिल है और एक सपोज कॉपी है. अब इन्हीं आइटम में से तुम्हें कोई भी कितना नंबर भी आइटम सिलेक्ट करना है कर लो. मैंने छोड़ दिया हूं कि यहाँ पे पेन है, पेंसिल है, कॉपी है. इफ यू वांट यू टेक एनीथिंग
If you do not want, no problem. कितना ले सकते हो, कितने तरीके से? बस that is the total number of subsets, right? कितना हो सकता है? पहली बार तुमने रूम में गया and then you find I am not interested in any one of them. You are not taking anything. So yesterday sir has told that this is symbolized as 5, right? Hebrew वहाँ पे जो symbol आया था, it was I think symbol or letter I think sir script. So that was telling you that I have selected none of them. It can be happening that you like to take only one pen. Maybe you like to take only one pencil, or maybe you like to take only one copy. So how many separate individual collection you made? 3. So these are sub collection of the bigger collections. एक में एक आइटम लिया मैं. अब कोई अगर बोलेगा नहीं, I want to take more items. कोई पेन ले सकता है, पेन के साथ पेंसिल का आइटम ले सकता है, दो आइटम. Then it may be pencil and then other item copy, or it may be copy के साथ pen. My handwriting is very bad. Try to adjust that. या फिर कोई बोलेगा नहीं भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, I need all. So ये जो different तरीका है, you are taking nothing. That is one way of selecting some items. One items. This is one way, another way of selecting. 2 items at a time you are picking. Another ways. 3 items. All 3 items you are picking. So these all collections are sub parts or sub collection of the original set. So these are known as subsets. So how can you relate this with the combinatorics? It is the ways in which you can pick this up. क्या 2 आइटम कितने तरीके से ले सकते हो? अगर कल बोल देगा 2 आइटम कितने तरीके से ले सकते हो? How many ways you have picked up 2 items out of this? 3 ways. एक आइटम कितने तरीके से ले सकते हो? 3 ways. ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन. अभी तो 3 आइटम के लिए है. कल अगर मेरे पास 100 आइटम होगा, मैं बोल दूंगा कि इन 100 आइटम में से 5 आइटम कितने तरीके से तुम ले सकते हो. तब ये प्रॉब्लम कॉम्बिनेटरिक्स में आ जाता है. मतलब यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेटरिक्स. But actually we are meaning the subsets. That means we are talking about the subsets of 5 items out of those 100 elements. Is anything understood? Yes, sir. Yes, sir. So here, how we make the symbol, how symbolization is done, let me try to tell you that. So whenever your original set is A, and these sets are named by other names, say this is named as B1. So this B1 is a sub collection of A. We use the symbol B is a subset of A. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्रोवर्सी होता है. हम लोग जब पढ़े थे, I am talking about my time, we have to write the subset with this symbol. But now in NCERT book, subset is written only with this, not the equal sign is there. Right? So, but I will be using this only what I have learned. Whenever I find that B1 is a subset, subset कब होगा? जब B1 का सारे एलिमेंट ओरिजिनल यहाँ से कलेक्शन से लिया जाएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? इट इज ए सबसेट ऑफ ए. सो ठीक उसी तरह से इसको अगर मैं B2 बोलता हूं, then I'll be writing B2 is a subset of A. Similarly, if I name this as say C1, then C1 is a subset of A. So in other words, यहाँ पे मैंने जो निकाल के दिया, total I have found the possible number of subsets of a set having 3 elements. तो कितना आया? काउंट करके देखो. How many are there? How many are there? It is 8. So you will find this as 8. So how it is done? First of all, we have found that particular collection where we have picked nothing out of that. So that can be done in one way. That is a null set. Whenever we have picked it up individually, one item, out of 3 items, we have selected how many items? 1 item only. So that is done in how many ways? 3 ways.
Then we have taken two items at a time. That also you can count that we have done in 3 ways. And last, all the items, because there are 3 items only, that also in 1 way. So whenever we add this up, this totals out to be 8. And this total is the number of subsets. Number of subsets. 8. Now, how will you do it? 8 और एक तरीके से भी ले सकता है. If we go for the way of Cartesian product, Cartesian product से भी लिया जा सकता है. Right? That also I quickly discuss. This will be the last explanation. तो इसको लेने के लिए हम कैसे करेंगे? देखो, Cartesian product कैसे बनाएंगे? पहला एलिमेंट में चले जाओ, तो इस एलिमेंट में चले जाते हैं. इस एलिमेंट को या तो तुम चूज करोगे अपना सबसेट के लिए, या फिर इसको रिजेक्ट करोगे. दैट मींस यू हैव 2 ऑप्शंस फॉर दैट. आइदर यू विल चूज और यू विल रिजेक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात कर रहा हूं. हाउ यू विल फाइंड द यूज द कार्टेशियन प्रोडक्ट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट हियर. ये पहला एलिमेंट के लिए मेरे पास ये ऑप्शन. फिर मैं सेकेंड एलिमेंट में जाता हूं. सेकेंड एलिमेंट में भी मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उसको लूंगा या फिर नहीं लूंगा. थर्ड एलिमेंट में भी मैं जाऊंगा, लूंगा या तो नहीं लूंगा. सपोज तुमने फर्स्ट एलिमेंट को लिया, इसके अगेंस्ट में कितना ऑप्शन खोलेगा? फिर 2 ऑप्शन. तो कितना होगा इसके अगेंस्ट में? 1 into 2, 2 वेज होगा यहां से यहां तक. इस 2 वेज के अगेंस्ट में यहां पे कितना वे होगा फिर? दैट यू काउंट. सो दैट यू कैन डू बाय व्हाट? यहां से 2 ऑप्शन आया पहला टास्क को करने के लिए. सेकेंड जो ऑप्शन है टास्क को करने के लिए 2 ऑप्शन आया. Because your task will not be completed until you finish with all the tasks. That means it is a continuous process. So you have to use the multiplication principle. So it will be 2 into 2. So total 2 cube number of such collection will be there, in which you may be getting these options as well. RRR. So RRR means you rejected all the items. That means you are talking about the null set, empty set. बाई चांस अगर तुम्हें 2 एलिमेंट वाला सेट चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए? कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? 2 एलिमेंट मतलब एक को रिजेक्ट करना, मतलब देयर शुड बी 1 R and 2 C. अब इसको जितने तरीके से लोगे, that will give you the number of subsets containing 2 elements. इसमें 2 एलिमेंट आएगा. अगर ऐसे लिखोगे 2 एलिमेंट आएगा, और ऐसे भी लिखोगे 2 एलिमेंट आएगा. मतलब है यहाँ पहला सेट से तुमने रिजेक्ट किया पहला वाला एलिमेंट को, और दूसरे एलिमेंट को ले लिया. इसमें दूसरे वाले एलिमेंट को रिजेक्ट किया, इन दोनों को लिया. सो दिस वे कितना बना सकते हो? दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 ऑप्शंस. बट प्रॉब्लम इज दैट ये छोटा है, तो हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं. इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी मोर, देन व्हाट विल हैपन? वी हैव टू मेक इट फॉर्मलाइज. कोई रिलेशन हमको लाना पड़ेगा. And that will be helped by the combinatorics. Fundamental principle of counting, that will be better. And here we can use the inclusion and exclusion principle as well. That will be coming. So that will be explained by sir. Already yesterday he has explained, but he will take some problem when we will get into the problem solving sessions. That time we will be getting in the detail. So that was okay. Just one point. We have to just my final comment. Yes, sir. That the sir has already told that he is using equal to sign. Yes, but here you see B1 is this set. Either pen, say B1 is this set containing pen. So here, if you do not write is equal to, it's all right. Yes. But in case of this one, the last one, suppose X is a subset of A. Suppose X is a subset of A. Medi. X proper subset or subset, sir? X लिखो केवल. Yeah, X is a subset of A. So if this equality sign is not given, that means we are excluding this, right? So that is why here when he is writing B1 means he is referring to this particular subset. So equality sign is not necessary. If he writes B2, yeah, equality sign is not necessary. But in general, when you will write that X is a subset of A,
you have to keep in mind that this is also a subset of, so this x is equal to a, this is a particular case. Yes. Right? This is a particular case. So if you, if this is, when B1 is this set, then okay, B1 subset of A, no need to write equal to sign. But when we'll be generalizing, the X is a subset of A. So this is a particular case that we are also thinking about this, the last subset. So I don't think there is a confusion that with what to write, whether not equality or whether we will use the equality sign, or even when we write X less than equal to 9. Yes. So X is equal to 9, that is a particular case up to X is equal to 9, right? So like that. Okay. So There should not be any confusion. yes, sir. So Also, okay, I will do some problem later on in the next class, next session. Yes. On this. So we'll be finishing it. Just to add up with this, if we consider this X less than or equal to 9, and if we write 3, 9, then here the symbol will be this. So whenever we are clear about these two, then we use the strict one. So here also, if I can see that B1 is containing really less element than the original set, your proper symbol will be this. We call it proper subset. And whenever we are not clear that I have to pick something which is maybe all elements are taken, or maybe some, or maybe none, then we keep the provision of both. This. So something like this too. So you are more acquainted with number theory, so you can compare this and you can switch on to that. So today with this, I'm going to finish it, right? So thank you so much for listening me. So if you'll be getting little help also, I'll be very happy. And then next day, tomorrow also there will be sessions. So I'll talk to sir who will take the sessions. There is Manavendra sir also. Maybe tomorrow the Surbi sir will take. So we'll discuss and we'll be taking number theory. So right now he is preparing something. Yes. So will these notes will be provided in the group? We can share it. If you need, we can share it. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Please feel free to ask any question in the group. No moderation, like no hesitation. And you ask clearly, koi baat nahi. If we can One solve. more point, we are not expert. We will also try hard, and if we can solve, we fine. If not, we'll try to solve it together. We are all learner here. yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, all of you. Is Manavan